Hello everyone, welcome to project 16. This project is all about system information functions. It is a part of our 25 topics, 25 projects of SQL series. Here in this video, you are going to see all the functions that will be useful when we need to get the information about the system, about MySQL while proceeding our projects. So let's quickly start with our query number 1. So our first query says to check current database in use. Okay. See, ये आपको बेसिकली ये बताएगा कि आप किस डेटाबेस में करंटली काम कर रहे हैं. इसको हम कब यूज कर सकते हैं? When you are managing multiple databases and want to confirm you are in the correct one or not. Suppose you get an error and suspect you might be in the wrong database. In such cases, you can use this function. So for the testing purpose, let's write here is use a store database. Okay. And let's run it. Now, when we check this, then let's see. Now, let's write the code. So for that, we need to write select, and the function which we are going to use is this. इसको हम एक alias name दे देते हैं. Suppose current database. Okay. So, जब हम इसको रन करेंगे तो हम करेंटली जिस डेटाबेस में है वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. So our current database is store. Okay. Now, let's take some another database. I'm going to use the sales database this time. Okay. और इसको हम रन करते हैं. Now, इस क्वेरी को जब हम दोबारा से रीरन कराएंगे, now let's rerun this. So now you can see the current databases are sales. So this is the way by which we can quickly see in which database currently we are in if we are dealing with multiple databases. Okay. Now, our second query is to check current connected user. Okay. Current connected user क्या है? ये basically क्या बताता है आपको username and host through which you are logged in. Okay. It is like checking which user you are currently logged in as. For that, we need to write select user as connected user. ठीक है. तो मतलब हमें यूजर चेक करने के लिए यूजर फंक्शन यूज करना होता है, which is this one. Now once we run it, then we can get the user detail. So this is the root @localhost. Okay. Now come to our third query, and it is says to get MySQL version. अगर आपको MySQL का version पता करना है, then what? For that, we need to write select. And then we will be using a version function. This will give the exact MySQL version as MySQL version. Okay. Now let's run it. And the version of MySQL is 8.0.39. Now the fourth query, and it is about to check the current session, to check the current session's connection ID. हमें करंट सेशन की जो आईडी है वो चेक करनी है. देखिए, हर बार जब हम MySQL से कनेक्ट करते हैं तो हमको एक यूनिक सेशन आईडी असाइन करी जाती है. ठीक है. इट्स लाइक अ टोकन फॉर योर करंट सेशन. सो अगर हमें इसको देखने की नीड है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द डीबगिंग स्लो कनेक्शंस एट दैट टाइम. सो इस टाइम पे हमें कनेक्शन आईडी की नीड होती है. सो वो हम कैसे देख सकते हैं? फॉर दैट वी नीड टू यूज द फंक्शन कनेक्शन आईडी as session ID. Now you can see that we will have our connection ID. Okay, connection ID function. So this is our sessions ID, which is 9. Okay. Now come to our fifth query, and it is to show current server time and SQL मोड. ठीक है. अगर हमें मोड और सर्वर टाइम पता करना है तो उसके लिए हमारे पास है सेलेक्ट नाउ एज सर्वर टाइम एंड SQL mode
ओके, एज SQL मोड। तो ये दो फंक्शंस हमें यूज करने होंगे यहाँ पे, एक तो नाउ और एक @ SQL अंडरस्कोर मोड टू गेट द SQL मोड। नाउ व्हेन वी विल रन इट देन वी कैन गेट द सर्वर टाइम हमारा ये है एंड SQL मोड जो है वो ये है। अब आते हैं क्वेरी नंबर 6 पे, एंड इट इज टू फाइंड डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन। ठीक है, डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन क्या है, अगर आपको यही पता करना है, so for that we can write select @ default storage engine as storage engine. Now when we will run it, here we have the storage. Okay, so here we have the storage engine, which is this one. Okay, now come to our 7th query, and it is to find the maximum number of connections allowed. Okay, अगर हमें पता करना है कितने हम maximum connections हमारे इसमें allowed है, so for that we need to write select @ max connections. Okay, बस हम alias name नहीं देते हैं अभी और इसको ऐसे ही रन करते हैं, so we can get the 151 maximum connections are allowed. Okay, now query number 8, and it says to log user activity with metadata. Okay, so for this we need to write select. Firstly, let's come to our store database. Now we need to select the, सपोज हम ऑर्डर टेबल्स में से ऑर्डर आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं और ऑर्डर डेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन हम यूजर फंक्शन यूज करेंगे एज क्वेरी रन बाय, ठीक है, और फिर हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे अपना, जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं एज db यूज्ड, ठीक है, और हम टेबल हमारी जो है वो ऑर्डर्स टेबल है और हम लिमिट ले रहे हैं 5 की। Limit is 5. Now we will get the metadata here. Okay, so this is okay, order id 101 query run by this, जो डेटाबेस यूज हो रहा है वो, so ये हमारे बिग प्रोजेक्ट्स में जब हमें सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं उस टाइम पे ये सारे फंक्शंस बेसिकली यूज में आते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। ऑलराइट, so this is it for this video guys, see you soon in the next video with a new topic and new project. Till then, take care, keep practicing, and bye bye.